Welcome for our present discussion for class 12 accountancy. We have started the chapter partnership part 1 volume 1. Today our discussion topic is interest on drawings. There are so many methods to calculate the interest on drawings of partners. First method, topic interest on drawings. Method 1, simple method. Under this method, just take an example. X has drawn rupees 10,000 and rate of interest is 12%. Drawings was made on 1st October 2019. 31st March is closing date in every year. Calculate interest on drawings. So, in this case, interest on drawings is equal to amount withdrawn, that is 10,000, and rate of interest, that is 12/100, and on which date drawings was made, on 1st October, and year ending is 31st March. So from 1st October to 31st March, that is October, November, December, January, February, March. So for 6 months. So 6 by 12. So 600 rupees will be treated as the interest on drawings. It is called the simple method. Next we are coming for the next method. Though this method is not directly given in the method of interest on drawings in the books, directly not discussed in the question given. That's why I am discussing in the method also. When date of drawings not mentioned in the question. Suppose this date is not given. Suppose question is given to you, Mr. X, this is method number 2. Mr. X has drawn rupees 10,000 and rate of interest is 12% and rate of interest is 12% PA. So, whenever date of drawings is not mentioned in the question, in that case, whatever rate of interest is given, we have to look after that percent whatever given, only percent given or percent PA given. In two different ways, different method will be applicable. For number A case A, when 12% given, then interest on drawings
is equal to total amount withdrawn 10,000 into rate by 100 12%. That's all. Direct for full year it will be assumed. So 1200 is the interest on drawings. But in case of case B, 12% PA given. So in that case, interest on drawings will be 10,000 into 12 by 100 into half year. For half year. Half year means 6 months. 12 months full year, 6 months half year. So 6 by 12 या 1 by 2 भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखना पड़ेगा PA दिया हुआ है कि नहीं है। कब देखेंगे? जब किस डेट में ड्राइंग्स किया पार्टनर, वो डेट नहीं दिया हुआ है, तब हम लोग को देखना पड़ेगा PA है कि PA नहीं है। अगर PA नहीं है तो फुल ईयर का जाएगा और PA है तो हाफ ईयर का जाएगा। नेक्स्ट वी आर कमिंग इन द थर्ड मेथड, मेथड नंबर 3। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड। दिस इज प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होता है? जब मोर देन वंस इन ए ईयर ड्रॉन। एक साल में जब एक से ज्यादा बार ड्राइंग्स करेगा कोई पार्टनर, तब प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होगा। जैसे सपोज 1 अक्टूबर 2019 पार्टनर ने 10,000 के लिए ड्राइंग्स किया। अगेन 1 दिसंबर 2019 20,000 ड्राइंग्स किया। फिर 31 जनवरी 2020 15,000 ड्राइंग्स किया। Let take this example. So अगर इस तरीके से ड्राइंग्स करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग्स 12% दिया हुआ है, तब हम लोग कैसे इंटरेस्ट ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे? तब आपको एक फॉर्मेट बनाना है। इट विल बी बेटर। फॉर्मेट इस तरह जाएगा, यहाँ पे डेट लिखेंगे, दैट इज डेट ऑफ ड्राइंग्स। यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट विथड्रॉन। यहाँ पे लिखेंगे मंथ और पीरियड। नाउ हियर प्रोडक्ट, दैट इज ऑन 1 अक्टूबर 2019 10,000 ड्राइंग्स किया। If in question year ending date is not given, then we have to assume that 31st March will be the year ending. और अगर 31st दिसंबर मेंशन कर दिया तो 31st दिसंबर पकड़ेंगे, और 31st मार्च मेंशन कर दिया तो 31st मार्च को पकड़ेंगे। अभी कुछ मेंशन नहीं है तो 31st मार्च को एज्यूम करेंगे हम लोग। 1 अक्टूबर से 31st मार्च, हाउ मेनी मंथ्स? 6 months. So here we have to write 6. Again drawings were made on 1st December. So from 1st December to 31st March, that is December, January, February, March, 4 months. So this is for 4. Again 31st January, so January is gone. So January will not be assumed. So February, March, only for 2 months. Now we have to multiply this amount into month, that is the product. 60,000, 80,000 and 30,000. Now you have to add this.
80,000, 60,000, 1,40,000, 1,40,000 and 30, 1,70,000. This is called total product. Total product. Now, interest on drawings is equal to formula total product into rate by 100 into 1 by 12. Total product is 1,70,000 into rate is given in the question 12% into 1 by 12, that is 1700. This is the interest on drawings. You may have one query that why 1 by 12? As because पार्टनर ने 10,000 ड्रॉइंग्स किया था, पार्टनर ने 20,000 ड्रॉइंग्स किया था, पार्टनर ने 15,000 ड्रॉइंग्स किया था, दैट इज 20 और 10 30 और 15 45, ओनली 45,000 रुपीज ड्रॉइंग्स किया था, 1,70,000 ड्रॉइंग्स नहीं किया था। तो 1,70,000 को जब ले रहे हैं मंथ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए टोटल मंथ इन ईयर से डिवाइड हो रहा है। इट इज द रूल्स फॉर दिस। So there are other methods also, monthly drawings and quarterly drawings. Those monthly and quarterly drawings will be discussed in my next episode. This much for the interest on drawings methods for these rules. Thank you very much. नहीं हो गया? हो गया। अब ये बीच में ये मैसेज आया, बंद कर दो। रिस्टार्ट होने लगा।